In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum, my dear students. Hopefully you all are doing well. I am your maths teacher, and this is your maths class. And here is your maths book. The name of your maths book is Mathematics. Mathematics. What is the name of your maths book? Mathematics, third step. Okay, so here you can see that the different numbers are written beautifully. Here are balloons. You can count that which number is this and which digit is this. Okay, so today's our topic is counting till from 1 till 50. So open your book page number 1. Okay, this is your book page number 1, and you can see that the numbers are written on this page. So you have to count and start reading from number 1 say 1 till 50. So you can read and count from your book, but we will do the practice in your practice book. Okay, so open your this practice book, close this book, and here is your practice notebook, and the practice notebook name is Fun with Maths. Okay, so you have to write down your name here. Class KG, don't write the section, I will write your section, and school name is ICMS. So open your notebook page number 1. Okay G, so here is your notebook page number 1, and you can see the numbers from 1 to 50, and our topic is read loud counting from 1 to 15. After reading, what you have to do, you have to color these all boxes. And which color is this? Here is a yellow color. Yellow color, why I choose the yellow color? Because in yellow color is light color, and the number is prominent if you will do the yellow color in this block. Here you can see the prominently number 1. Okay, and it looks beautiful if you will do the yellow color, and it will your coloring practice. Okay, so read with me. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 11 1 2 12 1 3 13 1 4 14 1 5 15 1 6 16 1 7 17 1 8 18 1 9 19 20 20. And what you have to do, I am reading the numbers and you have to read with me. Okay, 2 1 21 2 2 22 2 3 23 2 4 24 2 5 25 2 6 26 2 7 27 2 8 28 2 9 29 3 0 30 3 1 31 3 2 32 3 3 33 3 4 34 3 5 35 3 6 36 3 7 37 3 8 38 3 9 39 4 0 40 4 1 41 4 2 42 4 3 43 4 4 44 4 5 45 4 6 46 4 7 47 4 8 48 4 9 49 5 0 50. So we read the counting from 1 to 50. Now we will write all these numbers on next page. Open page number 2. Okay Ji, here is your notebook page number 2, and our topic is write counting from 1 to 15. First of all, on the top you have to write down the date, and today is 14. The month is April, and April is the fourth month of the year. Count with me. January, February, March, April. So fourth month, and the year is 2021. So let's start writing of the counting. The first number is 1. Okay, before writing you have to sharpen your pencil properly, and after that you can see this small line, a straight line. So you have to write 1 and touch this line. Don't write beneath this line. Okay, इस लाइन से नीचे आपने नहीं आना, इस लाइन के साथ टच करके यहाँ तक 1 लिखना है.
ये लाइन इसीलिए लगी हुई है ताकि आप इस लाइन के साथ टच करके लिखें ताकि प्रॉपरली नीट आए। 2 एंड टच द लाइन। लाइन से नीचे आपने बिल्कुल नहीं आना। 3 4 टच द लाइन। 5 touch the line। 6 touch the line। you can see that ये मैंने अब तक जितने भी नंबर्स लिखे हैं इस लाइन को टच कर रहे हैं बट इस लाइन से नीचे नहीं आए और आप देख रहे हैं कि सारे सीक्वेंसली जो है कितने नीट एंड टाइडी लग रहे हैं। 7 8 touch the line। 9 touch the line। 10 का 1 डालकर 0 जो है आपने जहाँ पर 1 स्टार्ट किया है वहीं से स्टार्ट करके थोड़ा सा ओवल शेप में 1 डालें, सर्कल शेप में नहीं डालना, थोड़ा सा ओवल शेप में, ठीक है। 10 1 1 11 1 2 12 1 3 13 1 4 14 1 5 15 1 6 16 1 7 17 1 8 18 1 9 19 2 0 20 touch the line। Okay dear students, you have practiced with me. After that I have written for you from 21 till 40 because it was consuming the time and वीडियो फिर थोड़ी सी लंबी हो जाती, तो इसलिए मैंने आपके लिए लिख कर यहाँ पर रख दिया है। मैं आपको अभी समझा देती हूँ। व्हाट कम्स आफ्टर 20? 2 1 21 2 2 22 2 3 23 24 25 26 2 7 27 2 8 28 2 9 29 3 0 13। अब जब 3 0 30 आ जाता है, आफ्टर दैट यू हैव टू राइट एंड स्टार्ट द 3 लाइन्स। नंबर 3 की लाइन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सो अब 3 1 31 3 2 33 3 3 33 3 4 34 3 5 35 3 6 36 3 7 37 3 8 38 3 9 39। व्हाट कम्स आफ्टर 3? आफ्टर 3 के बाद कौन सा नंबर आता है? वो है नंबर 4। तो हम यहाँ पर पहले 4 लगाएंगे 3 की जगह पे। और 9 के बाद कौन सा नंबर आता है? 10। तो 10 का हम 0 सिर्फ लगाएंगे, ठीक है। तो ये 4 0 40 बन जाएगा। अब यहाँ पर 4 है तो सबसे पहले हम 4 लिखेंगे, 4 की लाइन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर 4 सबसे पहले लिखेंगे और उसके साथ 1 लिखेंगे तो ये 41 बन जाएगा। अगेन फर्स्ट राइट डाउन 4 बिकॉज द 4 लाइन। अब सबसे पहले हम 4 लिखा करेंगे, उसके बाद हम दूसरा डिजिट लिखेंगे, दैट इज़ 2। 1 के बाद क्या आता है? 2, तो ये 42 बन जाएगा। अगेन दिस 4 आई विल राइट हियर एंड व्हाट कम्स आफ्टर 3? व्हाट कम्स आफ्टर 2? 3, तो ये 43 बन जाएगा। अगेन राइट हियर दिस वन 4। व्हाट कम्स आफ्टर 3? 3 के बाद क्या आता है? 4, तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे, ये बन जाएगा 44। ओके, अगेन राइट दिस वन 4। व्हाट कम्स आफ्टर 4? 4 के बाद कौन सा नंबर आता है? 5। यहाँ पर हम 5 लिखेंगे एंड दिस इज़ 45। अगेन राइट दिस 4 हेयर। व्हाट कम्स आफ्टर 5? 5 के बाद कौन सा नंबर आता है? 1 2 3 4 5 6। So here I will write number 6. This is 46. Okay, what again write down here 4 और 6 के बाद कौन सा नंबर आता है? 7. This is 47. Okay, again write down number 4, digit 4. What comes after 7? 8. So this is 48. ये अभी मेरा 8 जो है ये लाइन के साथ टच नहीं हुआ, दैट्स वाई आई विल रिमूव इट एंड आई विल राइट इट अगेन। ठीक है, आपने भी इस तरह नीट करके लिखना है। दिस इज़ 48। नाउ इट्स परफेक्ट।
ओके, अगेन राइट डाउन हेयर 4 एंड 4 9 8 के बाद क्या आता है 9, दिस इज़ 49. व्हाट कम्स आफ्टर 4? 4 के बाद कौन सा नंबर आता है 5 और 9 के बाद 0. जब 0 आता है तो 0 से पहले हमने नंबर ये स्टार्ट वाला चेंज कर लेना है, ठीक है. सो हेयर इज़ काउंटिंग 1 to 50. आपने रफ़ कॉपी में भी प्रैक्टिस करनी है और रफ़ कॉपी पे लिखने के बाद आपने इस कॉपी में नीट करके प्रैक्टिस करनी है. ओके, होपफुली यू एंजॉयड दिस क्लास. सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अल्लाह हाफिज़.